अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कल कहाँ तक हुआ था बेटा? सर कल अपन मैग्नेटिक नहीं, जूनियर सीनियर्स भी है ना? अरे वो गैस लॉस रहता है कल। कहाँ तक हुआ था बेटा गैस लॉस? चार्लिस लॉ हो गया सर। चार्ज ना हो गया सर। ओके। चलो expansion of gases में we have completed with your Charles law बेटा and as well as of your Boyle's law. तो what is the Boyle's law बेटा? याद है? At a constant pressure is inversely proportional to volume. Volume. And in the Charles law, Volume is directly proportional to temperature. Absolute temperature. करो जल्दी सभी लोग. A sample of oxygen, a sample of your oxygen with volume of 500 cc at a pressure of 2 atmosphere is compressed to a volume of 400 cc. What pressure is needed? 2.5 atmosphere. Pressure 2.5 atmosphere. 2.5 atmosphere. Isn't it? So what is the condition beta? P1 P1 equals to V1 P2 equals to V2. P2 is V2. equals to P2 into V2. अपने को चाहिए क्या? P2. P2 is equals to P1 into V1 by your V2. V2. ठीक है ना? P1 कितना है? 2. V कितना है? 500. 500. So this is going to 200. 200. So this will come out for me how much beta? This 2 is 1.25. cancelled. 2 1s are 2 2s are 5 by 2. That will be equal to 2.5 atmosphere. Yes sir. Clear है? Yes sir. चलो Yes, और sir. एक क्वेश्चन ले लो जल्दी से. An air bubble doubles in radius on rising. An air bubble doubles in radius on rising from bottom of lake. Rising from the bottom of lake to its surface. If atmospheric pressure is equal to that due to a column of 10 meter of water, then what will be the depth of the lake? Neglect the surface tension beta. चलो करो जल्दी से. Let me see how many of you can do it all.
सर प्रेशर रो जीएच से निकालना ना सर, हाँ ऑब्वियसली। तो आ गया। An air bubble doubles in radius and rising from the bottom of the lake. ये मान के चलो ये बॉटम ऑफ द लेक है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ऐसा। ओके, ये बबल है यहाँ पर जिसका रेडियस r था। जैसे भी सरफेस पे आ गया इसका डबल हो गया डबल, दैट मीन्स ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ r1। यानी r1 अगर r है तो r2 कितना होगा सरफेस पे आने के साथ ही 2r। So an air bubble doubles in radius on rising from bottom of the lake to its surface. If atmospheric pressure is equal to that of the column of 10 meter of water, then what will be the depth of the lake? मान के चलो this is the depth of the lake, that is nothing but h. ठीक है। So given it is at your constant temperature, कुछ भी नहीं दिया, so we are assuming it to be your temperature constant. So अगर temperature constant है तो P1 V1 will be equal to P2 into your V2. What is the pressure beta? Water column कितना दिया हुआ? Height. P is equals to, we know the relation H rho into G. G. So I can take height is given for me how much? 10 into density of liquid column is nothing but rho into G. Volume is 4 by 3 pi into your R1 cube is R cube. That is equals to P2. P2 will be equal to how much beta here right now? P2 will be equal to how much? Can you tell me? 1 atmosphere sir. 1 atmosphere. 10 plus of your H na beta. जी हाँ सर, Because already 10 centimeter hai. This is the height. So that will be equal to how much for me? 10 plus of your H. 10 plus of your H part of relation. So original height of this one will be equal to how much for me? 10 plus of your H. When it is coming from the bottom to this relation right now, उसकी height कितनी हो जाएगी? 0. यानी यहाँ पर ही अपने को condition लेना चाहिए P1 will be equal to what? जब ये यहाँ पर है छोटा ड्रॉप, so this will be equal to 10 plus of your H into density rho into G into volume is nothing but of your 4 by 3 pi into your R cube. That is equals, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो H 0 बन जाएगा, so only it will be 10 centimeter of water column into rho into G into this one is 4 by 3 pi into R will be equal to R into cube. आ गया। ये जब यहाँ था ऊपर का वाटर कॉलम कितना है? 10 प्लस हाइट, ये जब इट इज एट द सरफेस इनिशियल, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पे जब आ रहा है तो हाइट क्या हो रही है? स्लोली डिक्रीज होते हुए 0 हो जा रही है। सो इनिशियल इट इज 10 प्लस h, फाइनली इट इज ओनली टू द 10 पार्ट, इट इज कमिंग टू द ओपन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट नाउ। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट कितना दे रखा है उसने वाटर कॉलम का? 10 सेंटीमीटर। अब कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो 4 by 3 pi, 4 by 3 pi gets cancelled, rho G and rho G is also getting cancelled. तो ये हो गया मेरे पास 10 plus H. This one is your 10 plus of your H into your R cube is equals, ये हो गया कितना? 10 into your 2 cube. 2 का 2 cube कितना होगा बेटा? 8 होता है सर। 8. So it is your 8 times of R cube. R cube cancel. So 10 plus of your H is equals to your 80. तो H कितना बना बेटा? 70. 70 निकला सभी को? 80 minus of your 10, that will be equal to 70. So the height of the lake is कितना है? Depth of the lake कितना है मेरे पास? 70 meters. That will be equal to your 70 meters. Clear है? Yes sir. Is that clear? अच्छा, ये क्वेश्चन कर बड़े जल्दी से। 1500 milliliters of a gas at a room temperature of 23 degrees centigrade is
inhaled by a person, is inhaled by a person when body temperature is 37 degrees centigrade. Okay, if the pressure and mass, if the pressure and mass stay constant, okay, what will be the volume of the gas? What will be the volume of the gas in the lungs of the person? What will be the volume of the gas in the lungs of the person? अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, समझो and try to do it out. 1500 milliliters of a gas at room temperature of 23 degrees centigrade is inhaled by a person when body temperature is 37 degrees centigrade. If the pressure and mass are remaining constant. अब बताओ अगर pressure mass constant रहा है तो which law? Charles law. This will be your Charles law condition. So Charles law condition में क्या है अपने पास? V by T will be equal to your constant. यानी ये हो गया वॉल्यूम V1 by temperature T1 is equals to V2 by your T2. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है बेटा? इनिशियल टेम्परेचर is equals to 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. कितना बनेगा? 310 केल्विन. उसी तरह से 1570 ml आ रहा सर आंसर. हाँ, तो ये कितना आ रहा? देखो ये कितना है? 23 प्लस ऑफ योर 273. तो ये कितना आ जाएगा? 296 केल्विन. प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस आर केप्ट एट कांस्टेंट, यानी V1 by T1 is equals to V2 by T2. तो अपने को क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द लंग्स, यानी फाइनल वॉल्यूम V2. सो V2 is equals to कितना आ जाएगा? V2 is equals to V1 into ये हो जाएगा T2 divided by T1. V1 कितना है मेरे पास? 1500 milliliters into temperature 2 is 296 divided by this one is nothing but 310. 310. तो कितना आ रहा देखो approximately? 1.57 liters. 1.5 मिलीलीटर्स में है ना बेटा, आंसर आपको मिलीलीटर्स में देना पड़ेगा. 1570 ये केल्विन में ये भी मिलीलीटर्स में ही है अपने को. जी हाँ सर. ठीक है ना, यू विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर्स बिकॉज़ ये केल्विन कोई से भी इसमें लो, ये वैसे भी कट हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड में यूनिट्स तो सेम होंगे, सो दैट विल गेट कैंसल राइट नाउ. सो योर आंसर शुड बी इन मिलीलीटर्स ओनली. 1570 ml. 1570 ml सर. पक्का? हेलो. यस सर. Yes sir. उससे ज्यादा आ रहा बेटा अपने को. ऑलरेडी 1500 है, वो इनहेल कर रहा है, अपने पास 1500 ml ऑफ गैस है. अब उससे ज्यादा कैसे इनहेल करेगा वो? लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं. टेम्परेचर बढ़ला ना सर, टेम्परेचर बढ़ला तो वॉल्यूम बढ़ती ना सर. टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कैसा ही बढ़ती ना सर. वो हिसाब से 1500 से ऊपर आता. अब थोड़ा सा ऊपर आता क्यों? वो तो 310 में और 296 में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा. 1432 आ रहा सर, 1432 मिलीलीटर. देखो सर कैलकुलेशन देखो. 1432 मिलीलीटर सर. यस सर. ये ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते बेटा हम लोग. 296 से कितना आ रहा है? 296 ही है. 273 प्लस 223. Sir 310 ऊपर आना, 296 नीचे आना सर. हाँ सर. क्यों? T2 by T1 ना सर. हाँ, T2 कितना है? 296 है ना? नहीं सर, 310 है. 310 है सर. 73 डिग्री सेल्सियस दे रहा ना सर बॉडी टेम्परेचर. तो T2 बॉडी रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर इज 273, यानी टेम्परेचर T1 है ना बट. हाँ सॉरी, ये T1 होना चाहिए, ये अपने को T2 होना चाहिए. तो देन दिस विल बिकम फॉर मी T2 वैल्यू कितनी है? 310. सो दिस वन इज 310 डिवाइडेड बाय 296. सॉरी, अब देखो कितना? 1570 सर. 1570 सर, 1570 ml. हेलो. Body 1500 ml of a gas at a room temperature of 23 degrees centigrade is inhaled by a person when body temperature is 37 degrees centigrade. If the pressure of the mass of the gas is connected, what will be the volume of the gas part? सर ऊपर का आंसर 1.1 आता सर. 310
भाई 296 का है तो 1.1 से थोड़ा सा कम आता लाइक, फर्स्ट वन तो वो कितना हिसाब से है? अपन इनिशियल टेम्परेचर इज 23 प्लस 273, 296 बराबर ही लिखा, सो इट इज T2 by T1। तो ठीक है, रफली कितना आ रहा बेटा है? सर 1570। ओके 1570 ml। चलो वन मोर क्वेश्चन बेटा, a sample of oxygen is at a pressure of 1 atmosphere when the volume is 100 ml, and the volume is 100 ml, and its temperature is 27 degrees centigrade. What will be the temperature of the gas if pressure becomes 2 atmosphere and volume remains 100 ml? चलो बताओ जल्दी से। A sample of oxygen is at a pressure of 1 atmosphere beta when the volume is 100 ml and its temperature is 27 degrees, and what will be the temperature of the gas if the pressure becomes 2 atmosphere and volume remains the same 100 ml? यानी इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेसिकली तो क्या लोगोगे बेसिकली, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी P by T P1 by will be equal to your T1 constant. So it is P1 by T1 will be equal to your P2 by your T2. Initial temperature कितना है बेटा जल्दी से बताओ? Initial temperature is 27 plus 273 300 300 आंसर Kelvin। 600। T2 हम लोग को निकालना है, या आया सभी को? P1 कितना है बेटा? सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज नथिंग बट 300, प्रेशर इज डबल दैट इज 2P डिवाइडेड बाय योर T2। ये कितना हो जाएगा? डबल हो गया, यानी दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी? योर P की वैल्यू 1 है, सो दैट विल बिकम फॉर मी 2 into your 1। तो T2 बना कितना मेरे पास? T2 is equals to your 600 or this will be equal to your 600 minus 273। so डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा बेटा? 300 minus 273 is 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ ऑलरेडी आप लोग को केमिस्ट्री में हो गया, बोलना चाहिए सभी लोग। व्हाट डू यू मीन बाय एवोगाड्रोस लॉ बेटा? According to it, at the same temperature and pressure of your equal volumes of all gases will contain what beta? Equal number of your molecules, isn't it? याद है सभी को? भूल गए? याद है सर। At same temperature and pressure, at same temperature and pressure of your equal volumes of gases contains equal number of molecules, that is N1 must be equal to your En2. N1 must be equal to your En2 if pressure, volume and temperature are constant. If P, V and T are same, then at the same temperature and pressure of equal volumes of the gases contains the equal number of your molecules. That means N1 must be equal to your N2 part of relation, isn't it? The next one is Dalton's partial pressure of mixture. याद है सभी को ये भी? Dalton's partial pressure
और इसको हम लोग मिक्सचर लॉ भी बोलते हैं। Dalton's partial pressure law और also called as of your mixture law। ये क्या है बताओ सभी लोग, किसी को याद है? Pressure exerted by all the gaseous mixture will be equal to what beta? Sum of your partial pressures of all the components of the gases which are being present in the mixture। कोई भी अगर mixture of the gases है मेरे पास, whatever the pressure is exerted by the gaseous mixture, pressure exerted by the gaseous mixture must be equal to what beta? Sum of your partial pressures of your each component of the gases present in that mixture part। That means P will be equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4, go on, get that given condition। याद है ना सभी को? So I can write here this one at, sorry, pressure directly लिख रहा हूं बेटा, exerted, pressure exerted by a gaseous mixture, by a gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures, sum of your partial pressure of each component of gases present in the mixture, यानी P must be equal to P1 plus P2 plus P3 plus so on, isn't it? So that is about your Dalton's partial pressure of your mixture law और mixture law part definition। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ बेटा। वैसे भी सेकंड ईयर और लॉन्ग टर्म के बच्चों को definitions अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। So what do you mean by Charles law? What do you mean by Boyle's law? What do you mean by Avogadro's law? And what do you mean by the Dalton's partial pressures? In Dalton's partial pressure says that pressure exerted by any gaseous mixture is always equal to the sum of the partial pressures of your each component of the gas present in the mixture। यानी P will be equal to your P1 plus P2 plus of your P3 type relation। Clear सभी को? Yes sir, clear sir। इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे बेटा, पहले इसका इक्वेशन बता दो मुझे। इक्वेशन ऑफ स्टेट, equation of your state for your ideal gas, for your ideal gas, it is a combination of your Boyle's law and as well as of your Charles law, isn't it? So याद होगा रिलेशन सभी लोग के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? PV is equals to mu into R into T, where mu is nothing but sometimes represented by N. N is nothing but what for me? Your number of your moles, number of your moles of your gas, which is known as of your ideal gas equation। PV is equals to nRT जो हम लोग बोलते हैं basically। R I can write this one as PV is equals to mu is nothing but number of your moles of your gas। How do you write the number of moles of your gas beta? Mass by your molecular weight into capital R into your T part of relation। याद है सभी को? Yes sir। So this can also be written as of your PV is also equal to right now for the given condition, if I am multiplying with your Avogadro number down and as well as of your upper part inflation, number of your mass into your Avogadro number divided by your mass into your molecular weight, that is nothing but Avogadro number, whatever you are taking right now, that is nothing but molecular mass into your Avogadro number and not R, say for example N, into your R into T, मास इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये कैपिटल एम है ना, सॉरी ये हो गया मेरे पास कैपिटल एम, ये हो गया मेरे पास कैपिटल एम इंटू योर एन, और ये हो गया आर इंटू योर टी पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। सो इट इज एम इंटू योर अवोगाड्रो नंबर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स, एन नॉट इज नथिंग बट ऑफ योर अवोगाड्रो नंबर, एन इज नथिंग बट ऑफ योर नंबर ऑफ योर
moles, number of your moles part of relation. अगर हम लोग ठीक है वो kinetic theory में कर लेता हूँ basically, don't take the tension of that one. So here I can write in terms of your density beta. So PV is equals to your small m by capital M into your R into your T part of relation, and we know that density is equals to mass by your volume. So pressure I can write here P is equals to your M by your V into your 1 by M into your R into T. So ये कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, P is equals to mass by P is volume equals to your density rho into R rho into RT T by divided by M. your capital M part of relation. Clear है? Yes, sir. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो बेटा इस पे से. By increasing temperature, by increasing temperature of a gas by 5 cc, okay, its pressure increases by its pressure increases by 0.5% from its initial value, and constant volume, then what is initial temperature of gas? What is initial temperature of gas? चलो सर टेम्परेचर के यूनिट सीसी के साथ है सर. टेम्परेचर कहाँ बेटा मैंने, सॉरी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी वो सीसी नहीं, ये हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड. By increasing the temperature of the gas by 5 degrees centigrade, its pressure increases by 0.5% from its initial value and constant to volume. Then what is the initial temperature of the gas? चलो जल्दी से करो. वन स्टेप पे बोलना चाहिए था बेटा आंसर. So By increasing the 5.19, temperature of sir. the gas, कैसा आया बोलो, क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बेटा. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है देन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना बेटा. PV is equals to N into R into T. R वैसे भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर पार्ट ऑफ रिलेशन, is not directly proportional to your pressure. परसेंटेज में कर सकते हैं, बताओ परसेंटेज में आप लोगों को मालूम है लिखने का, डेल्टा टी, दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर डेल्टा टी बाय योर टी into your 100 is equals to constant होगा कुछ बेसिकली, so this will be equal to delta p by your p into your 100, है कि नहीं? अब बताओ कितना हो जाएगा. प्रॉब्लम में क्या जाओ, by increasing the temperature of the gas by your 5 degrees centigrade, the pressure increases by 0.5%. यानी ये पूरा कितना हो गया मेरे पास, डेल्टा p by p into your 100 is equals to your 0.5. 0.5. यानी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t वैल्यू is equals to your, ये हो गया मेरे पास टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है बेसिकली. सो डेल्टा टी, एक देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर बोला है, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 5 into your 100 divided by your 0.5. 0.5. आया सभी को? Yes, sir. ये देखो डेल्टा टी इज नथिंग बट इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा. सो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.5. सो टी बाहर निकालना है, सो डेल्टा टी दे रखा है मेरे पास 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई योर 0.5. तो ये कितना आ गया, 1000 केल्विन. आया? यस सर. Yes, sir. चलो और एक वाला क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल और अच्छा वाला क्वेश्चन है. सो प्लीज ट्राई टू गिव ए वैल्यू फॉर दिस वन एंड ट्राई टू डू इट आउट बेटा. कैलकुलेट
calculate the temperature of the sun. Calculate the temperature of the sun if density is 1.4 gram per centimeter cube minus q, comma pressure inverse है बेटा, pressure is 1.4 into 10 to the power of 9 atmosphere. ठीक है, and average molecular weight and average molecular weight of gases in the sun. 2 gram per mole. Okay, so I'm writing the value of an R here, beta. Given R is equals to 8.4 joule mole inverse Kelvin inverse. इसके पूरे वैल्यू मैं derive करूंगा, don't bother about that one. But anyhow chemistry में आप लोग ने derive किए होंगे, but still I'll try to derive all that one also. Now condition देखो बेटा यहाँ पर. Calculate the temperature of this sun. If the density is 1.4 gram per centimeter cube, pressure is 1.4 into 10 to the power of 9 atmosphere, and average molecular weight of gas in the sun is 2 gram per your mole. कर सकते हैं कोई? Four point 4 into 10 raised to 8, sir. No. कन्वर्शन करना है, छोटा है कॉन्सेप्ट, लेकिन कन्वर्शन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ नहीं है. आया? नाम केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया ना बेटा आप लोग को? स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया शायद ना? हमें ऑडिबल? चलो मैं कर Yes, देता हूँ. sir. PV is equals to nRT है बेटा. N क्या है? N is equals to mass by molecular weight. Density क्या है? Density is equals to mass by volume. तो mass Yes, क्या हो sir. गया? Mass is equals to rho into V. तो number of moles कितने बन जाएंगे? Rho into V by molecular weight लिख सकता हूँ मैं. तो ये वैल्यू लेके आके इसमें डालो यहाँ पर. इसमें से टेम्परेचर निकालो पहले. टेम्परेचर T is equals to PV by your N into your R. PV by N into R. तो ये हो गया P into V. N वैल्यू हो गया कितना बेटा? Rho into V divided by capital M into R. A वॉल्यूम चले गया. So it is your P into your M divided by rho into your R. So ये हो गया टेम्परेचर का फॉर्मूला. इतना आया सभी को? Sir, 2.8 into 10 raised to 8 है, sir. हाँ 2 पॉइंट में आ जाएगा, समवॉट अप्रोक्सीमेटली भी बोल दिया तो प्रॉब्लम नहीं है. अभी प्रेशर कितना दिया आगे बेटा अपने पास? व्हाट इज द प्रेशर ही हैज गिवन फॉर मी? 1.49 into 10 to the power of 9 atmosphere, यानी 1.4 into 10 to the power of 9. 1 atmosphere I'm taking approximately 10 to the power of your 5. Clear है? Into mass is how much बेटा? Mass कितना दिया देखो जल्दी से बताओ. Can anyone tell me what is the mass? 2 gram per mole.
2 ग्राम पर योर मोल, यानी कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है? सो दैट विल बी इक्वल टू योर 2 into 10 to the power of -3 divided by density. Density कितना दे रखा है? What is the density as given for me? 1.4. 1.4 gram per centimeter cube, यानी that will be equal to 1.4 into your A भी हो जाएगा 1000 into R. R की वैल्यू कितनी दे रखा है? 8.4, क्योंकि R की वैल्यू SI यूनिट में है ना बेटा, तो एवरीथिंग यू नीड टू कन्वर्ट इन द SI सिस्टम बेसिकली. क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये 1.4, ये 1.4 तो चले गया सीधा सीधा. क्लियर है? Yes, sir. अब ये पावर्स का खेल है बेसिकली, ये ऊपर चले जाएगा तो 10 to the power of -6, तो ये बना कितना? 10 to the power of 9 into 10 to the power of 5 into 10 to the power of -3. ये +3 है तो ये भी चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 to the power of -3 डिवाइडेड बाय, ये कितना है यहाँ पर? 2 डिवाइडेड बाय 8.4. तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो अप्रोक्स. पहले पावर्स बोलो, कितना आ रहा पावर्स? 10 power 8. 10 पावर 8. ये कितना आ रहा है? 2 by 8.4. 1 by 1.4, 2.3 sir approximately. तो कितना आ रहा है? 2.3 2.3 into 10 to the power of 8. 8 आ रहा. पावर देख लो एक बार जल्दी से. 9 14 minus 6 8 ही आ रहा सर. 80 है. चलो क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes sir. पक्का. 7. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से. At the top of a mountain, at the top of the mountain, a thermometer reads 7 degrees centigrade and barometer reads 70 centimeter of mercury. At the bottom of the mountain, they read 27 degrees centigrade and 76 centimeter of mercury respectively. Okay, compare the density of the air. Compare the density of your air at the top with that at the bottom. Chalo, read the question carefully and try to do it out. खाली रेशियो बताओ मुझे बस, कंपेयर करके, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. At the bottom of a mountain, at the top of the mountain, a thermometer reads 7 degrees centigrade in temperature, and barometer reads 70 centimeter of your mercury. That means what is that one beta? Pressure. One is pressure, another one is given as of your temperature for me, because barometer measures me what beta? Obviously the pressure, 70 centimeters of the mercury. At the bottom of the mountain, they read 27 degrees centigrade and 76 centimeter of mercury respectively. Compare the density of the air at the top with that of the bottom. आगे रहना तक. आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, PV is equals to N into R into T. ठीक है ना? N is equals to how much बेटा?
mass by your molecular weight. Density is equals to mass by volume. तो mass हो गया rho into v, तो ये हो गया rho into v divided by molecular mass. तो ये हो गया PV is equals to your rho into v divided by capital M R into T. A volume or a volume gets cancelled right now for the given condition. So I can write for the given condition right now. P by your rho into T. P यहाँ पर हो गया rho, isn't it? R is a constant and M is also constant. So P by T is equals to your constant. लिख सकता हो क्या मैं सर? P divided by rho into temperature. Capital R is a constant. Molecular weight is also a constant for that one. यानी P by rho of T at your top of your mountain must be equal to P by rho into your temperature of this one at your bottom of the mountain. Is it clear? So ये है temperature at the bottom, ये हो गया temperature at the top. I hope now you can do it out very easily. Everything is given in the problem for me. क्या आएगा बताओ? Density at your top, ये हो गया density at your bottom is equals, ये ऊपर चले जाएगा. So density at your top divided by your density at your bottom is equals to pressure at your top divided by your pressure at your bottom into temperature at your bottom by divided by temperature at your top. आया सभी को ये? sir calculation long है sir, options बोलिए ना sir. कई को ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, देखो जल्दी से बताओ. प्रेशर एट द टेम्परेचर कितना दे रखा है? 70 दे रखा है. 70 डिवाइडेड बाय 76 इनटू ये टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300. टेम्परेचर कितना दे रखा है? One is given at 7 degrees centigrade. Another one is given at your how much? 27 degrees centigrade. यानी 300 डिवाइडेड बाय your 280. तो इसमें से ये इसमें चले गया, तो देखो कितना आ रहा. 70 divided by 76 into your 30 divided by 28. खाली फ्रैक्शन में बोलो. Yeah. कितना आ रहा है बेटा? Shall I give the options? 75 divided by 70, 75 divided by 76, Second option sir. divided Second by option. 75 and 75 divided by your 72. कितना आ रहा? Second option. Second option. Very good. Second option will be the answer. It will be your 75 divided by 76. Clear है? Yes Yes, sir. sir. चलो, अब ये क्वेश्चन तो पक्का आप लोग को करना किसी भी. See अगर during an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law. Vp square is equals to your constant. Vp square is equals to your constant. First of all, the gas is initially at a temperature T. Is at a temperature T and volume capital V. Okay. So what will be the temperature of the gas when it expands
when it expands to a volume 2V. ठीक है ना? चलो. During an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law. Vp square is equals to constant if the gas is initially at a temperature of capital T and volume is V. What will be the temperature of the gas when it expands to a volume of your 2V? कितना है? During an experiment, an ideal gas is found to obey this law. Ideal gas का equation क्या है? PV is equals to N into R into your T. Given equation क्या है मेरे पास? VP square is equals to some constant. तो P square कितना बन गया? K by over K V. by V. यानी P is equals to कितना बन जाएगा? तो K तो constant है, ये बन गया root of your V. बना? तो P की Yes, जगह मैं sir. क्या डाल सकता हूँ? So this one is K divided by your root of your V into your volume V is equals to your NR into your T. तो ये हो गया V by your root of your V is equals to N into R into T. This is your constant K. ठीक है ना? Yes, sir. और V को कैसे ले सकता हूँ मैं इसमें से? V is equals to, what is the relation right now? I can write V is equals to K into P square. During an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law, Vp square. The gas is initially at temperature T and volume is given as of your V. What will be the temperature of the gas when it expands to a volume of your 2V? कितना आ रहा बता जल्दी से? सर 40 कैसा बेटा? ये V को कैसे ले सकता हूँ मैं बेटा? V can be written as of your root V into root V divided by root V is equals to N into R into T by your K. तो इसमें से तो ये चट कट गया, ये भी कट गया बेसिकली. तो अगर वो कट गया तो क्या हो गया? रूट V is directly proportional to your temperature. N constant है, R constant है, K भी constant है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? Root of your V1 divided by root of your V2 is equals to temperature of T1 divided by temperature of T2, isn't it? तो वॉल्यूम कितना है? V1 का वॉल्यूम है V, V2 का वॉल्यूम है root of your 2 times of V, so that is equals to your temperature. Initial temperature कितना है? T, final temperature कितना है? T2. ये root V गया कैंसिल, so 1 by root 2 is equals to T by over T2. तो T2 कितना बना बेटा? T2 is equals to कितना बना? जल्दी से बताओ. T2 is equals to Root 2 times of your T. आया सभी को? सर. Yes, sir. छोटा कैलकुलेशन नहीं है ना बेटा. अब कल सैटरडे मंडे के लिए एग्जाम, संडे के लिए एग्जाम, खाली आपको एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ओनली गैस लॉस तक ही रहेंगे बेटा. और VRMS velocities, RMS velocities, kinetic theory of gases will not be there for exam portion. So don't try to do the kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases का detailed explanation मैं करता हूँ. Only Boyle's law, Charles law, Avogadro's law and as well as ideal gas के ऊपर questions basically. ठीक है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay बेटा, चलो take care, bye.